हाय एवरीवन। तो आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान अकाउंट्स फॉर रफली अबाउट डैश ऑफ चाइना। तो चाइना की पॉपुलेशन एंड पाकिस्तान की पॉपुलेशन का रेशियो क्या है? ओके, सो दैट इज अबाउट 1/10। इट इज अबाउट 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपको क्वेश्चन देखना है और फिर आंसर पहले खुद देना है, फिर आगे सॉल्यूशन देखना है। तो व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? सो ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है फॉर सीयूईटी। डेटास का आना इतना जरूरी नहीं है, बट यस कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज है जो आपको करने पड़ेंगे। सो दैट इज 0.5%। हमारी ग्रोथ रेट उस टाइम लीस्ट थी, दैट वाज लीस्ट, इट वाज जस्ट 0.5%। Which of the following activities is included in the primary sector? What we include in the primary? Agriculture, services, industries. It is agriculture. When did the Gulf crisis take place? Gulf crisis कब हुआ था? Gulf crisis is one of the reason for new economic policies. Okay, it was one of the reason that we had a reform policy, and it happened during the same era when we started with a new reform policy, that is 1990 to 1991. How much loan was provided by the World Bank and IMF during the 90s to bail India out of crisis? Okay, we were facing economic crisis, so that we asked World Bank and IMF for a loan. And how much loan they have provided us? Around $7 billion. More than dash of the world's poor live in India. Okay. So that is one fifth. One fifth of the poor live in India because there are five main countries where the majority of the population is poor. Okay, or the more number of poor live there. So out of that, one fifth portion is of India. Which of the following institutes come under health sector? इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जो हेल्थ सेक्टर में आता है? एनसीईआरटी आप लोग को सबको मालूम है कि एनसीईआरटी का सिलेबस है, मतलब ये एजुकेशन से रिलेटेड है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूनिवर्सिटीज का है, जो फंड्स वगैरह प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज को। एआईसीटीई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचिंग एसोसिएशन एजुकेशन से रिलेटेड है। सो आईसीएमआर दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च। सो आईसीएमआर इज related to health sector because it is related to medical research. Which Indian state has been held as a success story in the efficient implementation of milk cooperation? Okay. मिल्क कोऑपरेटिव्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा स्टेट रहा? okay. ऑर्गेनाइजेशन इज आनंद डेयरी एंड द स्टेट इज गुजरात. ऑल राइट. Which what is the name of the vegetable and fruit market in Andhra Pradesh? So it is Raitu Bazaar. If you remember, अगर आप लोगों ने मेरा मॉक लाइव देखा था, एनटीए का पेपर जो था इकोनॉमिक्स का, उसमें रिदम बाजार लिखा हुआ था. ओके, सो उधर जो पेपर क्यों हटा दिया गया? सो दैट इज रायतू बाजार फॉर आंध्र प्रदेश. इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द कंट्री. इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी किस चीज में कंट्रीब्यूट करती है? इट कंट्रीब्यूट टू द GDP of a country. Economic activities are performed so that GDP growth can be increased. Worker population ratio analysis, the situation of dash in the country. Worker population ratio किस चीज को एनालाइज करती है कंट्री के अंदर? इज इट एनालाइज अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट? दैट इज एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने वर्कर हैं. सो इट वर्क ऑन एम्प्लॉयमेंट.
Okay, dash sources of energy are found in nature and forest. नेचर और फॉरेस्ट में कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है? दैट इज रिन्यूएबल. The hospitals at the village level are known as, village level पे जो hospitals होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? We call it PHCs, primary health care centers. Okay, they are called primary health care centers. Next question. Dash has huge potential because they are effective, safe and inexpensive. Okay, हमारी कंट्री के अंदर ये डैश आर द ह्यूज पोटेंशियल, दे आर इफेक्टिव, सेफ एंड इनएक्सपेंसिव. नाउ प्लीज टेक केयर, एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइंस पिक होती हैं टू फ्रेम द क्वेश्चंस. ओके, though I have purposely picked this line, though it is not clear कि किस पर्पस से रिलेटेड बोल रही है, तो रैंडमली आपको नहीं फिल करना है. आपको अपनी एनसीईआरटी बुक ध्यान से पढ़नी है और उससे रिलेटेड आपको इसमें भरना है आंसर. सो एनसीईआरटी बुक में ये लाइन क्लियरली दी हुई है दैट इंडियन system of medicine, ISM. Okay, Indian system of medicine has huge potential because they are effective, safe and inexpensive. ISM में आयुष आता है. आयुष is आयुष, आयुर्वेद, यूनानी, योगा, सिद्धि and naturopathy. Accessibility and dash need to be integrated in our basic health infrastructure in order to provide basic health care to all. So accessibility and affordability कि आप तक आप easily हेल्थ केयर सेंटर्स पे जा भी पाओ और आप पेमेंट भी कर पाओ, आप अफोर्ड भी कर पाओ उसको. सो accessibility and affordability. Okay, both economic and social infrastructures are essential for the development of a country. This statement is absolutely correct. So it's true. So economic and social, both infrastructures are required. We know there are two types of infrastructure. For economic development, we need economic infrastructure. For social development, we need social infrastructure. If you have any doubts, you can put in a chat box, or else I'll go quickly so that we can cover majority portion and we could cover all 50 questions which I have prepared for you. So quickly देखते हैं. Which of the following is not a biotic element? इसमें से कौन सा biotic element नहीं है? So biotic element is not biotic, is sunlight. Birds, forest, animals, the one who are living beings are comes under biotic में आते हैं. Which of the following is a renewable resource? इसमें से कौन सा renewable है? Coal, petroleum, iron ore? No, it's fish. Fish are the renewable resource. Which of the following is an impact of global warming? इसकी वजह से, इन सब की वजह से impact of global warming ढूंढना है हमें, ना कि global warming क्यों हो रहा है. प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. An impact of global warming. What causes global warming नहीं है. What impact does global warming put? ये question है. So deforestation, rise in the sea level, waste generation, rapid increase in population. So that is rise in the sea level. In which of the following layers of the atmosphere is ozone shield found? Ozone shield हमारी किस layer में found होती है? ये सबसे near में होती है, that is stratosphere. Stratosphere layer में होती है. All right. Which of the following is a consequence of ozone layer depletion? कि ozone layer depletion से what all effect will be there? Skin cancer, yes. Lower production of psychopath plants, yes, it affects plants also. Hampers growth of terrestrial plants, yes. So answer will be D, all of the above. Which of the following is not an indicator of human development? इसमें से कौन सा human development का indicator नहीं है? So that is density of population. Neither the GDP per capita nor the life expectancy at birth and the literacy rate, because literacy rate again shows human development. Life expectancy at birth again shows human development because how much social infrastructure, how much health facilities we have. And then GDP per capita, that means income per person, GDP per person. So again, it shows the human development. So density of population does not comes under
Human development. How many people died approx in the devastating earthquake that took place in Pakistan in 2005? That was around 75,000 people. ओके, अब यहाँ पे ये चीज आप लोग ध्यान रखना, डेटा के क्वेश्चंस चांसेस कम है आने के, लेकिन अगर आते हैं डेटा के क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ डेटा आ सकते हैं, अगर डेटा वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ऑप्शंस इतने क्लियर होंगे, आपको स्टेटमेंट सुन के क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर पिछले क्वेश्चन को रिकॉल करें तो पिछले क्वेश्चंस में क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द जीडीपी ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सो दैट वाज द लीस्ट, क्योंकि ब्रिटिश हमें किसी चीज में हेल्प नहीं करते थे, सो दैट वाज द लीस्ट, दैट इज 0.5, तो ऑप्शंस में सबसे लीस्ट वाला। अब यहाँ पे पाकिस्तान में अर्थक्वेक से कितने लोग मरे, सो अगेन दैट वुड बी मोर मैक्सिमम, क्योंकि इतना बड़ा चीज थी ये, सो मैक्सिमम नंबर विल बी देयर। सो डेटा क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है, मेजोरिटी वो इस टाइप की हिंट आपको मिलेगी, इधर द हाईएस्ट और द लोवेस्ट, और कुछ नियर वैल्यूज रहती हैं। China has recently started moving towards a dash system. China has recently, because it's what's completely socialist economy, now it is moving towards a democratic system. Now even they want democracy. The People's Republic of China was established in 1949. प्लीज टेक केयर, जो डेट्स वगैरह होती है वो डेटा नहीं होता है, वो इजिली पूछे जा सकते हैं, तो डेट्स आप सबकी याद करिएगा। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवोल्यूशन, मनी किस ऑर्डर में इवोल्यूश हुआ था? सबसे पहले कमोडिटी मनी था, बाटर सिस्टम था, तो यस आंसर वुड बी बिटवीन ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट आया हमारी मेटल करेंसी आई, सो मेटल मनी, ओके, बिकॉज अशरफियां थी, गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन्स वगैरह, so commodity money, then metal money, then paper money, and then credit money. Okay? Credit money can also be considered as plastic money, where we use debit card, where we use ATM cards. So B is the answer. Which one is included in primary function of money? Primary function of money में क्या include होता है इसमें? Medium of exchange, measure of value, both A and B, store of value. So both A and B, medium and the measure of value, जो store of value है वो secondary function है, store and transfer and deferred payment. ये तीनों जो होते हैं secondary function of money होते हैं. The primary function of commercial bank is, primary function क्या है commercial bank का? Accepting deposit, advancing loan, credit creation, all of the above. So it is all of the above, because they accept deposit, they advance loan, और loan से ही वो credit create करते हैं. That is why all of the above will be the answer. A bank keeps a liquidity ratio of 4%. It receives an additional cash of deposit $50,000. Calculate the credit multiplier. Okay. Now credit multiplier. Credit multiplier आपको calculate करनी है. What is the formula? K equals to 1 upon liquidity ratio. So that is 1 upon 4%. That makes it 25. Okay, 100 by 4 हो जाएगा. So that will be 25. Next comes the potential increase in total liability and the potential increase in bank lending. So बैंक के ऊपर कितनी liability create हुई total, और कितना बैंक ने money lend किया. So total liability कितना create किया? So 1 upon legal reserve, total liability equals to 1 upon legal reserve into cash deposit. So that we have just calculated 25 into and then 50,000. Okay. So that is 25 into 5, 125, and then 4 zeros. Okay. So 12 lakh 50,000 is created, is the total liability created. Now what is the total lending? How much money they have lent actually? Okay. So this is the total lending, sorry, this is the bank lending. Bank has lent the money this much, 1,25,000, 12,50,000. And what is the total liability they have created? Total liability will be uh, total lending minus cash deposit.
So minus 50,000, that comes out to be 12 lakh. So this is B, this one is A, and this is C. All right. टोटल लाइबिलिटी मतलब कि उनको कितना पेमेंट एक्चुअली करना है, ओके। एंड टोटल बैंक लेंडिंग कितना एक्चुअली लोन क्रिएट किया, तो क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/रिजर्व इनटू कैश डिपॉजिट। सो टोटल लेंड मनी इतना किया और खुद के ऊपर टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई, 1,25,000 माइनस 50,000। सो लाइबिलिटी इतनी क्रिएट करी कि 1,20,000 की। ऑल राइट, नाउ वी हैव, suppose in a hypothetical economy, the income rises from 5,000 crore to 6,000. So income is increasing from 5,000 to 6,000. As a result, the consumption expenditure rises from 4,000 to 4,600. Marginal propensity to consume in such a case will be. So MPC formula is change in C upon change in Y, del C upon del Y, and del C is 600 and 1,000 is income change. So that is 0.6. It means answer is D. Now 31st question. If MPC is equals to 1, the value of the multiplier is. So multiplier formula is 1 upon 1 minus MPC. 1 upon 1 minus 1, that is infinity, because it will be 1 upon 0. So any number divided by 0 will be infinite. 32. Okay. In an economy, the marginal propensity to consume of the unemployed is higher than that of taxpayers. Okay, so that means marginal propensity to consume is higher for the taxpayers. It means those who are earning, they consume more in the economy. The government increases expenditure on unemployment benefits by $10 million. अब government ने क्या करा, $10 million से expenditure इंक्रीज कर दिया। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जिनकी इनकम नहीं है उन लोग के लिए भी इनकम रेस कर दी। What will be the government need to do if wishes to keep aggregate demand unchanged? अगर वो चाहते हैं aggregate demand को unchanged करें तो वो क्या करेंगे? Definitely they will raise the tax. टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा। okay? Leave tax unchanged तो हो नहीं सकता, तो tax will increase. But by how much? Equal to 10, less than 10 or more than 10? कितना increase करेंगे? That will increase more than $10 million. So more than वाला, this is more than. So answer will be B. Why they will do more than 10 million? Because लोग सिर्फ कंज्यूम नहीं करते हैं, लोग सेविंग भी करते हैं। इसलिए कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए टैक्स को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट के पास ज्यादा रेवेन्यू है, गवर्नमेंट और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे सके। Which of the following arguments for a sloping aggregate demand curve is unconvincing? इसमें से कौन सा है जो unconvincing है? A rise in the price level in the countries will tend to lead to a fall in the real value of export and rise in the real value of import. Yes, जब हमारी country में महंगा होगी, that means if our country is facing inflation, our real value of the export will fall and the real value of import will rise. हमें इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा, रियल वैल्यू, बिकॉज वी हैव टू पे मोर, एंड देन हमें एक्सपोर्ट जो है वो चीप हो जाएगा, रियल वैल्यू। द राइज इन द प्राइस लेवल इन द कंट्री विल लीड टू लोअर रियल स्पेंडिंग एंड बिकॉज इट विल लीड टू लोअर रियल वेल्थ। डेफिनेटली, बिकॉज अगर प्राइस राइज होगा तो कम वेल्थ होगी, कम स्पेंडिंग होगी। rise in the price level in the country will reduce the real value of the firm's profit, causing them to reduce planned investment. ये थोड़ा डाइसी है, क्योंकि जब प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है कि प्राइस लेवल इतना बढ़ रहा हो कि फर्म्स को प्रॉफिट नहीं हो रहा हो। सम टाइम प्राइस लेवल कैन राइज एंड कैन जनरेट प्रॉफिट ऑल्सो। सो ये सिचुएशन यहाँ पे भी क्लियर नहीं है। लेट्स सी द डी ऑप्शन ऑल्सो। राइज इन द प्राइस लेवल इन द कंट्री विल लीड टू लोअर रियल स्पेंडिंग बिकॉज इट विल लीड टू हायर इंटरेस्ट रेट। नो, जब प्राइस लेवल हाई होता है इकोनॉमी में तो इंटरेस्ट रेट लो हो जाता है, तो ये नहीं। सो अगेन सी, this could happen sometime,
ओके, इंटरेस्ट रेट अगर हाई होगा क्योंकि मनी सप्लाई की डिमांड ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट हाई भी हो सकता है. सो दोनों सी और डी में से मेनली कंफ्यूजन सी और डी में से है, बट मोर टुवर्ड्स द सी, बिकॉज ये कहीं भी नहीं शो होता कि हाई प्राइसेस की वजह से फर्म्स का प्रॉफिट रिड्यूस होता है. सो देयरफॉर आंसर वुड बी सी. कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ, कैपिटल बजट में क्या आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, नन ऑफ दीज. सो कैपिटल बजट में आएगा कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज सुटेबल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज? इसमें से कौन सा बजट है जो डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए सुटेबल है? डेवलपिंग इकोनॉमीज मीन्स, अब पहले तो यहाँ पे डेवलपिंग इकोनॉमीज मीन्स जहाँ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा. ओके, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज्यादा होगा. व्हाई एक्सपेंडिचर इज मोर फॉर गवर्नमेंट? बिकॉज फॉर द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. तो ऑब्वियसली डेफिसिट होगा. Okay. So deficit budget, because government expenditures will be more than government receipts, so that causes deficit budget. Which of the following statement is true? From this statement, which is true? Fiscal deficit is a difference between total expenditure and total receipts. No, it is total expenditure minus total receipts other than borrowings is important. Primary deficit is the difference between total receipts and interest payment. No, primary deficit is fiscal deficit minus interest payment. So this statement is also not true. Fiscal deficit is the sum of primary deficit and interest payment. Yes, this is true. Okay, because what is primary deficit? It is fiscal deficit minus interest payment. So if we'll take it here, so primary deficit plus interest payment will make fiscal deficit. Who issues 1 rupee note in India? 1 rupee note कौन issue करता है इंडिया के अंदर? That is Ministry of Finance, Finance Ministry of India. And RBI issues 2 rupees to 2000 notes. Okay, give me a minute. Yeah, 38th question. From the following data, about a government budget, calculate primary deficit. Primary deficit you have to calculate. So what is the formula for primary deficit? Fiscal deficit minus interest payment. Okay. So let's see, fiscal deficit is given, interest payment is given 20. Now we have to see primary deficit. So borrowings are not given. That means we have to calculate fiscal deficit. What is the formula for fiscal deficit? Total expenditure minus total receipts other than borrowing. Total expenditure minus total receipts other than borrowing. Now let's see total expenditures. So capital expenditures is given. Okay. Non-debt creating capital receipts are given. Tax revenue is given. So non-debt creating, I hope it's visible. You can read it. Revenue deficit. This is written revenue deficit. This is non-debt creating capital receipts. Non-debt creating capital receipts मतलब कि आपको total receipts दी हुई है. Capital receipts. अब आपको सिर्फ revenue receipts निकालनी है. तो revenue deficit is given to you is equals to, how to calculate revenue deficit? Revenue expenditure minus revenue receipts. So revenue deficit is 40. Revenue expenditure we have to calculate, and revenue receipts is given 125. So that will be revenue expenditure minus revenue receipts, and it's given 125. Add up. So revenue expenditure is equals to 165. So total expenditure will be 220 plus 165. 6, 7, 8, 3, 385.
minus total receipts. So total receipts will be tax receipts and non-debt capital receipts. So this total 5, 9, 10, 11, 3, 315. So that comes 70. So 70 rupees, 70 crore is the answer. Given the following data, estimate the fiscal deficit. Now you have to find the fiscal deficit. Total expenditure minus total receipts other than borrowing or the borrowings of the government. So we can see net borrowings by the government in a question. You don't have to do any calculation. Whatever is the borrowing amount will be your answer. That is 780. When was gold standard abandoned? Gold standard कब abandoned हुआ था? That abandoned in 1920s. Okay, please take care. It did not abandon in 1940s. 1940s में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का एंड स्टार्टिंग हुआ था, एंड हुआ था. बट गोल्ड स्टैंडर्ड की स्टार्टिंग जो है वो 1920s के लेट में स्टार्ट हो गया था. ओके, प्रायर टू 1920s गोल्ड स्टैंडर्ड चलता था. Measure to improve the adverse balance of payment include. किन चीजों से एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट हो जाता है ना. एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस, एक सिंपल लैंग्वेज में समझे तो व्हेन एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट. तो अब इस चीज को करेक्ट कैसे करें? या तो एक्सपोर्ट को अपन, आई एम सो सॉरी, दिस इज एडवर्स. सो एडवर्स इज एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट. सो या तो आप एक्सपोर्ट को बढ़ाएं या इंपोर्ट को कम करें. ये दोनों ही चीज आपको देखनी है. तो करेंसी डिवैल्यूएशन. करेंसी डिवैल्यूएशन का मतलब goods and services of our country will be cheaper, therefore demand for goods and services will increase, hence export will increase. So yes, this is a measure to correct adverse BOP. Now import substitution, मतलब import substitution मतलब import को कम करना. You are not allowed to import. Import की जगह अपने domestic goods को use करो. So that will reduce import. So हमें import reduce करना ही है. इसकी वजह से import will reduce. So yes, B is also the answer. Exchange control. Exchange control is done by the RBI, by the central bank of a country through managed floating. तो अगर कंट्री के अंदर ऐसी सिचुएशन है कि बीओपी को एडजस्ट करना है या फॉरेन एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करना है, सो गवर्नमेंट कैन, सॉरी, सेंट्रल बैंक कैन इंटरफेयर. So yes, all the three sources are the answer. So hence the answer is all of the above. If exporters, I'm so sorry, yeah, 41 na, 42. If exports increase export, then BOP is export more than import. अभी पीछे हमने देखा क्या था, export less than import था, तो adverse BOP कहलाता है. तो जब export ज्यादा होगा import से, तब उसे हम क्या बोलेंगे? Favorable BOP. Okay, we call it favorable or surplus BOP भी आप बोल सकते हैं. Okay, but favorable is more correct word. Okay, so table. The table shows the balance of 4 items in a country's current account on the balance of payment for 2 years. तो country's current account का balance में 2 year का account आपको दिया हुआ है. Okay, it's a current account balance. Current account में क्या क्या transactions आते हैं? Export, visible good, invisible good, and invisible good के अंदर services आ जाती है, income आ जाता है और current transfers आ जाता है. तो चारों ही हमें transactions यहाँ पे दे रखे हैं. ईयर 1 की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ईयर 2 की इंफॉर्मेशन दे रखी है. नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द चेंजेस बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2? सो ईयर 1 एंड ईयर 2 पे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? स्टेटमेंट क्या कंक्लूजन निकल रहा है? सो फर्स्ट, द करंट अकाउंट बैलेंस हैज मूव्ड इनटू डेफिसिट. तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है में चला गया, उसके लिए आपको करंट अकाउंट बैलेंस निकालना पड़ेगा. करंट अकाउंट बैलेंस कैसे निकलेगा? You have to add them. ईयर 1 और ईयर 2 का ऐड कर लेते हैं. बैलेंस ऑफ गुड्स, बैलेंस ऑफ सर्विसेज, बैलेंस ऑफ इनकम एंड बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर्स नीड टू बी एडेड. सो लेट्स ऐड देम. So minus 72 and minus 24. Minus 72 and minus 24 will be minus 96. 84 plus 12. 84 plus 12 is 96. So this is plus 96 and minus 96. So cut, that means it is 0. तो करंट ईयर 1 का करंट अकाउंट बैलेंस क्या आया? 0 आया. अब ईयर 2 का बैलेंस चेक करते हैं.
87 plus 3, 90, 94. So minus 94, and then we have 46. So 94 minus 46 gives you 4, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8. So that comes out minus 48. कैलकुलेटर नहीं होगा आप लोग के पास भी, ओके, सो डोंट यूज द कैलकुलेटर, खुद ही कैलकुलेशन करना है. सो माइनस 48. सो ईयर वन में क्या था, जीरो था करंट अकाउंट का बैलेंस, और ईयर टू में क्या है, इट्स माइनस 48. दैट मीन्स current account has moved into deficit. So yes, first the current account balance has moved into deficit. Answer should be A only, but हम दूसरे options को एक बार देख लेते हैं. The difference between the value of exported and imported services has increased. ओके, सर्विसेज जो है इंक्रीज हो गई है एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड की. सो 84 से 96, नो इट इज रिड्यूस्ड, ये गलत है. द अर्निंग फ्रॉम ओनरशिप ऑफ फॉरेन एसेट्स हैव इंक्रीज्ड. ना फॉरेन एसेट से अर्निंग इंक्रीज हो गई है. इनकम 12 से -3 हो गई है. अगेन नो, इट इज रॉन्ग. द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड हैज फॉलन. एक्सपोर्टेड गुड्स की वैल्यू जो है वो फॉल हो गई है. सो -72 से -87, वैल्यू इज ऑलरेडी लो. और सिर्फ एक्सपोर्टेड बोल रहा है वो. ये पूरा वैल्यू हमें नेट वैल्यू मिला है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके. सो वी कैन नॉट कमेंट कि दिस इज ओनली फॉर द एक्सपोर्ट, क्योंकि हमें इंपोर्ट की वैल्यू यहाँ पे पता नहीं है. सो नो, डी कैन नॉट बी द आंसर. यस, सो आंसर वुड बी A, that current account has moved into deficit from 0 to minus 48. Now question 44. When is balance of trade deficit likely to be considered a particularly difficult problem for a country? Balance of trade. Please take care, it is balance of trade, not balance of payment. Balance of trade is only for the goods. डेफिसिट लाइकली टू बी कंसिडर्ड पर्टिकुलरली डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर अ कंट्री. जब बीओटी हमारा डेफिसिट में होता है, मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ गुड. एक्सपोर्ट हमारे गुड्स का कम हो रहा है और इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं. ये कंट्री के लिए कब नुकसानदायी होता है, क्योंकि कब अच्छा नहीं होता है. व्हेन द इंपोर्टेड गुड्स आर आइडेंटिकल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स. जब जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हमारी कंट्री में अवेलेबल है, फिर भी हम बाहर से लेकर आ रहे हैं, तो यस इट साउंड्स कि ये कंट्री के लिए फेवरेबल नहीं है. लेट्स चेक अदर ऑप्शंस आल्सो. व्हेन द इंपोर्टेड गुड्स आर आइटम्स ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट्स. जब आप इंपोर्ट कर रहे हो कैपिटल इक्विपमेंट्स, व्हेन यू इंपोर्ट कैपिटल इक्विपमेंट्स, यूजुअली ये डेवलपिंग कंट्रीज करती हैं जो बाहर से इंपोर्टेड गुड्स लेती है. क्यों? क्योंकि उससे आगे और डेवलपमेंट होगा इकोनॉमी के अंदर. So no, that doesn't seems harmful. When the important goods are the raw material for exports. ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप रॉ मटेरियल ले रहे हो. जब आप रॉ मटेरियल ले रहे हो मतलब आप उसको प्रोसेस, यही तो ब्रिटिश ने किया था हमारे साथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, दे प्रोड्यूस इन देयर कंट्री एंड देन सेल इन आवर कंट्री, फिर वो एक्सपोर्ट करते थे. सो नो, दैट इज नॉट अनफेवरेबल. When the imported goods to cover temporary shortage. जब कभी टेम्पररी शॉर्टेज होती है कंट्री के अंदर तब हम इंपोर्ट करते हैं, तो अगेन दैट इज नॉट हार्मफुल टू द कंट्री. सो हार्मफुल इज when we have the same type of product but still we are importing from the other country. So yes, A is the answer. 45. In spring 2011, that US dollar exchanged for 81.6 Japanese yen. In spring 2012, the US dollar exchanged for 76.1 Japanese yen. What would be expected to rise for the United States as a result of this change? इस रिजल्ट की वजह से क्या चेंज आएगा? मतलब पहले क्या था, 1 US dollar was equals to 81.6 yen, and now $1 is 76.1 yen. That means there is appreciation of yen and
Depreciation of dollar. Dollar is depreciated and yen is appreciated. Now see, what would be the expected rise of the United States? मतलब यूएस में क्या इंक्रीज हो जाएगा? यूएस की करेंसी क्या हो गई है? डेप्रिशिएट हो गई है. The level of unemployment, dicey. The price of US dollar export sold in Japan. Okay. एक्सपोर्ट का प्राइस वो बोल रहे हैं बढ़ जाएगा. नो, बिकॉज यूएस डॉलर की करेंसी क्या हुई है? डेप्रिशिएट हुई है. तो अब उन्हें एक्सपोर्ट के लिए कम रेट मिलेगा. सो नो, डेफिनेटली नॉट बी. द रेट ऑफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन. यस, आंसर इज सी. कि इम्पोर्टेड जो गुड्स हैं वो महंगे हो जाएंगे इनकी कंट्री में, बिकॉज नाउ देयर कंट्री करेंसी इज डेप्रिशिएटेड. So whatever they are going to buy from the Japan will be costly, and when it is costly, that will cause imported inflation in the country. Okay. The volume of the import, no, it doesn't impact the volume. जरूरी नहीं है volume बढ़े कि decrease हो. Depend upon the requirement of a country. So for this information is not clear. So answer goes to C. Last four questions. The creation of choice is done by scarcity of resources, less choices, the urgency of needs, abundance of resources. Why do we have to make choices? We have to make choices because there is the scarcity of resources. If there would be abundance of resources, there would be no problem of choice. सबको सब मिल जाएगा. Okay? कुछ choose करना ही नहीं पड़ेगा. Which branch of economic theory is associated with the difficulty of resource allocation? रिसोर्स एलोकेशन को कौन सी ब्रांच जो है डील करती है? इकोनोमेट्रिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, नन ऑफ द अबव. Yes, I know you know the answer. That is microeconomics. Macroeconomics deal with the distribution of income, and econometrics deals with the mathematical portion. Calculation पे वो ज्यादा वर्क करती है. कि जब आप लोग अपने कॉलेज में मास्टर्स लेवल पे जाओगे तब इकोनोमेट्रिक्स पढ़ोगे. Change in quantity demanded of a commodity due to change in real income of the consumer caused by the change in own price of the commodity is called. Please ध्यान देना, change in real income बोल रहा है. तो real income मतलब purchasing power. Okay? ये किसकी वजह से होती है? इसे हम बोलते हैं income effect. Okay? अगर ये topic, if I'll just get you recall, ये हमारे points हो गए causes for law of demand. This is the causes of law of demand. जिसमें income effect, substitution effect, price effect, okay, alternative uses, ये points थे. A fall in income of a consumer in case of normal goods will cause, okay, income of the consumer is falling. So what will happen to the normal good? Normal good के साथ क्या होगा? Upward movement on the demand curve? No, movement तो definitely नहीं होगा. There will be no movement. Okay, so not A and B. क्योंकि ये प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर की वजह से चेंज आ रहा है डिमांड में. सो दैट विल कॉज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. अब शिफ्ट कैसा होगा? इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, तो दैट विल कॉज राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व. आंसर इज सी, नॉट लेफ्टवर्ड. लेफ्टवर्ड किसके लिए होगा? फॉर inferior goods. It will be for inferior goods. Okay. Now we are on our good last 50th question. A consumer attain equilibrium in case of one commodity. One commodity में equilibrium कब आता है? Equilibrium का भी मतलब ही कुछ equal होगा. Okay? तो क्या equal होगा? Zero के equal तो नहीं होगा. So that will be MUX equals to PX. So answer is A here. With that, we end our questions of mock revision of the economics. आपको एक जेस्ट मिल गया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. डू प्रैक्टिस, डू रीड योर एनसीईआरटी बुक, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. गॉड ब्लेस यू ऑल.